The arrangement of flowers on the floral axis is known as venation, phyllotaxy, anthology, estivation. Correct answer is option C. Arrangement of flowers on the floral axis is known as anthology, while arrangement of leaf on the main axis is known as phyllotaxy. Question number 302. Double fertilization and triple fusion were discovered by Winkler, Nowotny, Strasburger, Leeuwenhoek. Correct answer is option B. Phenomenon of double fertilization and triple fusion in angiosperm were discovered by Nowotny and Gignard. Question 303. Pollen tube enter the embryo sac through integument, micropyle, chalaza, funicle. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब इंटर होती है एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जिसको नाम देते हैं माइक्रोपाइल का. क्वेश्चन 304. Abundance of species population within its habitat is known as absolute density, regional density, relative density, niche density. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. हैबिटेट के अंदर स्पीशीज़ पॉपुलेशन की अबंडेंस को नाम देते हैं नीश डेंसिटी का या स्पीशीज़ डेंसिटी का. क्वेश्चन 305. एरनकाइमा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपीफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Erenchyma are spongy tissue which are present in hadrophytes and help in gaseous exchange. Question 306. Transition zone between two communities is known as ecotone, ECAD, ecotype, keystone. Correct answer is option A. Ecotone is a transition boundary between two overlapping communities और ecotone रीजन पे जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है उन्हें एज स्पीशीज़ का नाम देते हैं. क्वेश्चन 307. In which of the following interaction both partners are adversely affected? Competition, predation, parasitism, mutualism. Correct answer is option A. Competition is a type of negative interaction where both partners are adversely affected. So it is a type of negative type of interaction. Question 308. A mechanism that has evolved among the species that promote coexistence rather than exclusion. Competitive release, interference partitioning, intraspecific competition, resource partitioning. Correct answer is option D. If species promote coexistence, अगर वो एक ही जगह पे इकट्ठे सर्वाइव कर रही हैं, then there will be evolution of resource partitioning among them and they will use resources alternatively. Question 309. Efflux of potassium and chloride ion will cause closure of stomata, opening of stomata, increased turgidity or imbibition. Correct answer is option A. पोटाशियम और क्लोराइड आयन की इफ्लक्स की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जबकि इस पोटाशियम और क्लोराइड आयन की इनफ्लक्स की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं. क्वेश्चन 310. ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन good soil moisture, in highly wind velocity, or in dry environment, or in high atmospheric humidity. Correct answer is option D. Transpiration and humidity are inversely proportional. So if atmospheric humidity is high, then transpiration will be less. Question 311. Frequency of an allele may change in isolated population due to genetic drift, mutation, natural selection, gene flow. Correct answer is option A. आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने की जो मेन वजह है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है. क्वेश्चन 312. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, endoplasmic reticulum and cytoplasm, ribosome and cytoplasm, mitochondria and cytoplasmic particle. Correct answer is option D. Extra nuclear genes are present in mitochondria and other cytoplasmic particle.
Question number 313. Alcoholic fermentation is carried out by Saccharomyces, Lactobacillus, Clostridium, Aspergillus. Correct answer is option A. Alcoholic fermentation is carried out by Saccharomyces cerevisiae yeast. Question 314. Diagrammatic representation of chromosome is known as karyotype, ideogram, chromosome map, phenogram. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्रोमोसोम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आइडियोग्राम का नाम देते हैं। क्वेश्चन 315। मोडी डिस्क्राइब म्यूटेशन एज फैक्टर, साल्टेशन, स्पोर्ट, शॉटगन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। According to Modi, mutation are shotgun and these are the inheritable changes in germoplasm. Question 316. Root knot disease of brinjal is due to Phytophthora infestans, Meledogne incognita, Fusarium odum, Xanthomonas citri. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्रिंजल के अंदर जो रूट नॉट डिजीज़ है ये एक पैरासाइटिक निमाटोड स्पीशीज़ मेलाडोग्ने इनकग्निटा की वजह से होती है। क्वेश्चन 317। क्रिब्स साइकिल बिगिन विद द रिएक्शन ऑक्सालोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में, सिट्रिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में, ऑक्सालोएसिटिक एसिड प्लस पायरुवेक एसिड, ऑक्सालोएसिटिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्रेब्स साइकिल के स्टार्ट में ऑक्सालोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये आपस में रिएक्ट करते हैं और सिट्रिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। Question 318. Multiple allele control inheritance of color blindness, sickle cell anemia, blood group, phenylketonuria. Correct answer is option C. Blood group AB is controlled by multiple allele. Question 319. Succinate is oxidized to fumarate in Krebs cycle by removal of hydrogen, loss of electron, addition of oxygen, removal of oxygen. Correct answer is option A. Fumarate is formed when succinate is oxidized under the influence of enzyme succinate dehydrogenase और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है और इसको चेंज कर देता है फ्यूमरेट में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सक्सिनेट इज चेंज इनटू फ्यूमरेट बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन 320. Transition mutation is due to replacement of GC by TA, AT by CG, CG by GC, AT by GC. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ट्रांजिशन म्यूटेशन के अंदर जो है वो प्यूरिन बेस पेयर रिप्लेस हो जाता है पैरामिडीन बेस पेयर से या फिर पैरामिडीन बेस पेयर रिप्लेस हो जाए प्यूरिन बेस पेयर से, तो इसको नाम देते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन का। सो इफ़ AT इज़ रिप्लेस्ड बाय GC देन दिस इज़ नॉन एज ए ट्रांजिशन म्यूटेशन। Question 321. Loculus is the internal space of grana, stroma, thalakite, quantosome. Correct answer is option C. Loculus is the internal space of thalakite. Question number 322. The first phase of translation is amino acylation of transfer RNA, recognition of anticodon, binding of messenger RNA to ribosome, recognition of DNA molecule. Correct answer is option A. ट्रांसलेशन प्रोसेस के स्टार्ट में अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन की जाती है, मीन अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर लोड किया जाता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है अमाइनो एसाइलेशन का या फिर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए का। क्वेश्चन नंबर 323. Vascular bundle with protoxylem towards the periphery is known as radial type, enlarged type, exarch type, closed type. Correct answer is option C. Exarch type of vascular bundle के अंदर जो protoxylem है that is directed toward periphery.
Question 324. Chemicals having profound effect on growth and development are known as enzymes, phytohormones, catalytic agent, manure. Correct answer is option B. Phytohormones are the chemicals which are produced by plant and they affect growth, development and germination. Question 325. Offsets are produced by meiotic division, mitotic division, parthenocarpy, parthenogenesis. Correct answer is option B. Offsets are the vegetative parts of plant or daughter plants and they are produced by mitotic division. Question number 326. Colchicine prevent the mitosis of cell at which phase of karyokinesis? Metaphase, anaphase, prophase, interphase. Correct answer is option A. Colchicine is an inhibitor and it inhibits the formation of spindle fiber uh, during metaphase stage. Question 327. Movement of sunflower towards the direction of sun is known as photonasty, phototropism, nyctinasty, seismonasty. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सनफ्लावर की जो सूरज की डायरेक्शन में मूवमेंट है इसको नाम देते हैं फोटोट्रॉपिज्म का. Question 328. The centromere of a chromosome is also called satellite, primary constriction, secondary constriction, centriole. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं एंड पार्ट अदर देन द सेंट्रोमेयर इज नॉन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. और मोस्टली न्यूक्लियस क्रोमोसोम के ऊपर जो NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. Question 329. Source of maximum sulfur is ocean, lake, sand, land, rock. Correct answer is option D. Maximum source of sulfur is rocks. Question 330. Photorespiration in C3 plants start from phosphoglycerate, phosphoglycolate, glycerate, glycine. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है जब रूबिस को कन्वर्ट करता है, स्प्लिट करता है राइबोलोज 1 बिसफास्फेट को एक मॉलिक्यूल में जिसके अंदर 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड और फास्फोग्लाइकोलेट दोनों प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 331. Decreased rate of photosynthesis at high concentration of oxygen is referred as Richard Lang effect, Warburg effect, Emerson effect, Pasteur effect. Correct answer is option B. High concentration of oxygen inhibit or decreases the rate of photosynthesis and this effect is known as Warburg effect. Question 332. Species endangered but with unknown cause is known as rare, vulnerable, intermediate, indeterminate. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. अगर स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो लेकिन उसके इंडेंजर्ड होने के काज जो है वो अननोन हो तो ऐसे स्पीशीज़ को कैटेगरी देंगे इनडिटर्मिनेट की. Question number 333. The term alpha diversity refers to genetic diversity, community and ecosystem diversity, diversity among the plants and species diversity. Correct answer is option D. Alpha diversity is also known as species diversity or community diversity, mean diversity that is present among the species, within the species or community. Question 334. All the following are included under in situ conservation except Biosphere Reserve, Sanctuary, National Park, Botanical Garden. Correct answer is option D. Botanical Garden जो है वो in situ के बजाय ex situ conservation में आता है तो ये लफ्ज़ expect नहीं है except है.
तो सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क तीनों एनसीटो कंजर्वेशन में आते हैं, जबकि बॉटनिकल गार्डन एक्सिटो कंजर्वेशन में आता है। क्वेश्चन 335, Quanocytes occurs in Sycon, Hydra, Aurelia, Adamsia. Correct answer is option A. Quanocytes are the characteristics cells of sponges, and given example में Sycon एक sponge है। Question 336, select the correct statement. All annelids have seta, all mollusks have external or internal shell, all echinoderms have water vascular system. तो ये यहाँ पे M आना है। ऑप्शन डी, ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव एट लीस्ट वन पेयर ऑफ एंटीना। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, जितने भी एकाइनोडर्म हैं सब के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। Question 337, in silkworm, silk is the product of salivary gland of larvae, cuticle of adult, cuticle of larva, salivary gland of adult. Correct answer is option A. लार्वे के जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनसे सिल्क प्रोड्यूस होता है। Question 338, a phylum with triploblastic acylomate animal is Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelids, Arthropod. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट हैं। क्वेश्चन 339, a parasitic red colorless red algae living on other red algae is known as Harviella, Batrachospermum, Porphyra, Cephalorus. Correct answer is option A. Harviella is a colorless red parasitic red algae, और ये दूसरे रेड एल्जी के ऊपर पैरासाइटिक है और उस रेड एल्जी का नाम है पोलीसाइफोनिया। सो हर्वियला इज़ अ पैरासाइटिक रेड एल्जी ओवर पोलीसाइफोनिया। Question 340, Cycas and adiantum resembles each other in having seeds, motile sperms, cambium, vessels. Correct answer is option B. Cycas, which is a gymnosperm, and adiantum is a maiden hair fern, एक ट्रिडोफाइट है। अब ये दोनों आपस में रिसेम्बलेंस रखते हैं क्योंकि दोनों के पास मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। Question number 341. In endomycorrhiza, fungus is generally ascomycetes, zygomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes. Correct answer is option B. एंडोमाइकोराइजा के अंदर जो फंगस है वो मोस्टली जाइगोमाइसीड्स होता है, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स फंगस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, volume of blood that enter aorta with each ventricular systole is known as vital capacity, cardiac cycle, stroke volume, cardiac output. Correct answer is option C. Stroke volume is the volume of blood that is enter in the aorta with the left ventricle contraction or ventricular systole. Question 343. The pulmonary volume that cannot be measured by spirometer directly is known as residual volume, tidal volume, vital capacity, or inspiratory capacity. Correct answer is option A. Residual volume को जो है वो हम spirometer के through directly measure नहीं कर सकते। Question 344. Steroid hormone regulating glucose metabolism is cortisone, cortisol, corticosterone, or 11-dehydroxy deoxycorticosterone. Correct answer is option B. Cortisol is a main steroid hormone that is regulating glucose metabolism in our body. Question 345. Depolarization of nerve cell involve influx of potassium ion, influx of sodium ion, influx of calcium and chloride ion, efflux of sodium ion. Correct answer is option B. डीपोलराइजेशन के दौरान जो है वो सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम नर्व सेल के अंदर आता है और एक्सॉन में इंटर होता है।
तो इससे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व सेल. Question 346. Vitamin D is synthesized by body from LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride, cellulose. Correct answer is option B. Our body synthesizes vitamin D by using high density lipoprotein cholesterol. Question number 347. Active enrolling of endodermal and mesodermal cell into the interior of the membrane embryo is known as ingression, involution, inversion, epiboly. Correct answer is option B. एंडोडर्मल और मीजोडर्मल सेल्स की जो एक्टिव इनरोलिंग है टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, इसको नाम देते हैं इन्वोल्यूशन का. Question number 348. Most harmful type of environmental pollutant are human organic waste, natural nutrients in excess, waste animal feed, non-degradable chemical. Correct answer is option D. Non-degradable chemicals are most harmful type of environmental pollutants because they stay for longer time in the environment and cause serious damage to plants, animal, and other living beings. Question 349. Which is not vestigial organ in man? Tail, vertebrae, nail, nictitating membrane, vermiform appendix. Correct answer is option B. Nail जो है वो vestigial organ में नहीं आते. Question 350. Most likely reason for development of resistance in insects against pesticide is genetic recombination, acquired heritable changes, random mutation, directed mutation. Correct answer is option C. अगर इंसेक्ट्स के अगेंस्ट आप ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो उससे उनके अंदर जो है वो रैंडम म्यूटेशंस आएंगी और उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. रैंडम म्यूटेशन इज़ मोस्ट प्रोबेबल रीज़न.